your curve, how your curve get divided? Can anyone tell me how the curve is divided? AV, mid and low. Yes, it is low frequency, then mid frequency, and the high frequency, right? So in mid frequency, your output or the gain is constant. That term you can specify, right? So when you consider the curve is like this. If you see my finger, the gain is increasing, then it's constant, and then again gain, and the output is decreasing. So in which frequency you will get output or gain constant? Mid frequency. In mid frequency, right? So all the analysis, like in EDC you have seen AC analysis. In that we have calculated input impedance, output impedance, then voltage gain, current gain. So that parameters are calculated in only mid frequency. So that analysis, that AC analysis is, remember this point, the AC analysis is applicable in mid frequency, because in your mid frequency your amplifier is giving faithful output. That is, your response is flat, output is constant, right? And then why the gain is reduced in the low frequency? Can anyone tell me? Yes, you can raise your hand. Why the gain is reduced in the low frequency? मैम कैपेसिटर के इम्पीडेंस के वजह से वो राइट कम फ्रीक्वेंसी पे इनफाइनाइट, मतलब जीरो पे इनफाइनाइट रहता है इम्पीडेंस. So at low frequency, how the circuit react? Open circuit, as open circuit. Open circuit, but it is like if you compare that circuit, amplifier circuit, with any filter. So what type of filter? High pass filter. High pass filter. Yes, correct. So in that your gain is reduced, and slowly when you are increasing the frequency, your gain will increase. Okay, Sonia ma'am, you can continue. Sonia ma'am, you are on mute. Should I start with the lecture, ma'am? Yes. Yeah. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Yeah. Good morning, ma'am. Yeah, good morning. Good morning. So today what we'll be doing is, we have seen your low frequency response. You know how your amplifier behaves for your low frequency. Today we will see how it behaves in your high frequency. So what we will be doing is, I'll just tell you how the flow will be. Yeah, Anvita ma'am, Yes, ma'am. please give me sharing options. Yeah. Ma'am, I'll make you co-host. Yeah. Yes, ma'am. You can share. Thank you, ma'am. So what we will be doing is, I'll just tell you how we will go for your high frequency response. Are you able to see the screen? No, No, ma'am. ma'am. Yeah, it will come. Yes, Now- ma'am, it is visible. Yeah, thank you. So what we will see, the first thing we will see, your different type of capacitors. As I told you, Recording you in have progress. parasitic capacitors also. In your low frequency, basically your coupling and bypass capacitors are acting, but in your high frequency, your stray capacitance comes into picture. So we will be seeing stray capacitances, how they are developed, stray capacitances. So first thing you will see about that. Okay, what are your different stray capacitances and how they will affect your frequency, your circuit. And then we will start with different stray capacitances.
in BJ. Now I'll not go with BJT. This I will do your JFET. Low frequency मैंने आपको BJT से समझाया, so your BJT is clear with you, and similarly you have done your FET also. So this I will explain you using FET, and BJT will be on the same lines. So different state capacitance in FET. So we will start with FET over here. Third thing we will see is Miller capacitance. Miller capacitances. This is very, very important. Your Miller capacitances, or you can say, what is your Miller effect? We will call this as Miller effect. A very, very important topic for your high frequency response. So Miller capacitance is very, very important. And finally, we will see the dominant frequency. Analysis karke, you have to find the dominant frequency like you have found for your low frequency. Okay. So let me first start with your stray capacitor. These four things we have to cover in your high frequency response. So let us first start with your stray capacitances. Can anyone tell me what, if they know what are stray capacitances? किसी को भी कुछ भी पता है? Anything? What do you feel? What should be your stray capacitances? Anything? जो component Parasitic capacitors. Parasitic capacitance, right? But वो होते क्या है? Ma'am, they lie on nodes. They lie on nodes. Okay. अब मुझे एक simple, I will tell you. Capacitor. What is a capacitor? We all know that capacitor is nothing but two parallel plates. Suppose these are your two parallel plates with opposite charges. Suppose they are positive charges over here. Here you have negative charges. Okay. And separated by a dielectric material. This is separated by your dielectric material. Dielectric material, or you can say an insulator. Dielectric material is nothing but your insulator. So this is your capacitor. Capacitor is nothing but two parallel plates with opposite charges separated by a dielectric material. तो कहीं पे भी अगर you have two parallel plates which has opposite charges and they are separated by your insulator or your dielectric material, it will be called as your capacitor. So stray capacitances are those capacitances which are present in your devices, in your circuits, or you can say in your normal day-to-day electric applications, but you cannot see them. अगर मैं आपको coupling capacitor बोलती हूँ, CC1, which was there in your circuit, CC2 or CE, you were able to see these capacitances. आप कोई लैब में जाते हो, हम बोलते हैं कैपेसिटर लेके आओ 10 माइक्रोफैराड्स का. So you are able to see those capacitances. Okay, but there are capacitors which you cannot see by your naked eyes. You cannot see them, but they are present in your circuit, in your electric system, and those are called as your stray capacitances. So stray capacitances are capacitors which you cannot see with naked eye, which cannot be seen by your eyes, but they are present. Okay, so abhi how they are formed. Up now come to your diode. I will tell you how they are formed in your diode. A diode ka construction, if you all know that your diode is nothing but your p-type and a n-type material. So this is your p material, this is your n material in your diode, and that is separated by a dielectric. One minute.
that is separated by your depletion region. This was your depletion region. ये सबको पता है, right? You have p-type material, you have n-type material, and that is separated by your p-type material. So if I see over here, ये p-type है. p-type में majority carriers are your holes. तो यहाँ पे holes है. And in your n-type, the majority carriers are your electrons. Okay? So in a simple diode, as अब compare करो इसको एक capacitor के साथ. Capacitor में आपने क्या बोला है? There should be opposite charges. So you can see opposite charges over here. This is your plus charge of your n. Electrons are over here. So negative charge is over here. And separated by your dielectric, and this depletion region acts as your dielectric medium. Depletion is acting as your dielectric. That means there is always a capacitor present over here. This is your capacitor which is present over here. Right? Have you understood this point? Yes, ma'am. Ma'am, Yes, ma'am. Yes. रे कैपेसिटेंस में उसका लेंथ बहुत कम होता है क्या, इसलिए नहीं दिखता नेट पैक से? क्या कम होता है? रोहित फिर से पूछो. I didn't understand your question. क्या कम होता है? No, ma'am, it wasn't me, it was Rishabh. अच्छा सॉरी ऋषभ, क्या? नेकेड आई से नहीं दिखता है ना मैम, आपने बोला स्ट्रे कैपेसिटेंस. नेकेड आई से नहीं दिखता है क्योंकि ये इंटरनली डेवलप्ड है. ये आपके डायोड के इंटर स्ट्रक्चर, जो डायोड आपने बनाया है उसके स्ट्रक्चर की वजह से इंटरनली डेवलप्ड है. आपने बाहर से इसको खरीदा नहीं है मार्केट से जाके, ये इंटरनल है इसलिए आपको दिखता नहीं है, बट वो आपके सर्किट में प्रेजेंट है क्योंकि दो पैरेलल लाइंस है यहाँ पे. ये पैरेलल आपकी लाइंस हो गई, पैरेलल प्लेट्स हो गई. ये आपका डिप्लीशन रीजन हो गया और ऑपोजिट चार्जेस हो गया जो हर डायोड में आपके प्रेजेंट है. इसलिए हर डायोड में आपका कैपेसिटर एट योर डिप्लीशन रीजन प्रेजेंट है. तो ये आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये इंटरनल उसके स्ट्रक्चर की वजह से, फैब्रिकेशन की वजह से प्रेजेंट है. समझा अभी? हाँ मैम. So in your, we have understood that in your diode there is a capacitor present. Okay. Now come to this. अब मेरा ट्रांजिस्टर पे आओ. This was your diode. Now come to your transistor. If we see the structure of your transistor, it is this way. I am taking PNP transistor. So P-type material, N-type material, again a P-type material. Between this PN junction, there is a depletion region. Between this PN junction also there is a depletion region. ये आपका depletion region है. This is your depletion region of your first diode. First PN junction. This is your depletion region of your second PN junction in your transistor. Okay. We know that over here is the emitter. Over here is the base. And over here is the collector. Okay. ये भी आपको पता है. अब मुझे बताओ, when I'm saying that every time there is a diode is formed. तो यहाँ पे एक diode बना between P and N. This is your diode. That means between base and emitter there is a diode. This is your diode between base and emitter. Okay. Between collector and base also there is a diode. So between collector and base also there is a diode. ये भी आपका diode है. So जहां यहाँ आपका डायोड है, there is a capacitor. यहाँ से भी आप देख सकते हो there is a capacitor. So indirectly there is a capacitor present over here. Two parallel plates separated by your depletion. There is a capacitor over here. यहाँ पे भी एक capacitor आपका बना है like this. There is a capacitor over here. This capacitor which are formed over here is between base and emitter. So we call it as CBE.
And over here, the capacitor is between base and collector. So we call it as BC. ठीक है, तो हर ट्रांजिस्टर में भी जहां जहां आपका ट्रांजिस्टर होगा, over there you will be having a capacitor between collector and base, and you will be having a capacitor between base and emitter. But as I told you, you cannot see these capacitances. These are your stray capacitances. But ये आपके ट्रांजिस्टर के जंक्शन के कैपेसिटर्स है. ये आपका ट्रांजिस्टर का जंक्शन है. Over here, this is your transistor junction. This is your transistor junction. This is your transistor junction. Your emitter, base, collector are your transistor junctions. Therefore, these two capacitors, जो भी आपके junction पे बनेंगे, they are also called as your junction capacitors. They are also called as junction capacitors. ठीक है? Is this clear? Have you understood this? Any doubt till here? किसी को doubt है? Please tell me if you have understood. Tell me yes, so I can move ahead. Yes, ma'am. Understood. Okay, thank you. One more capacitor is present over here. One more capacitor. What we said is a capacitor is nothing but two parallel plates separated by opposite charges and by a dielectric material. Okay, dielectric present there. Which is that capacitor between emitter and your collector? Also you have a capacitor. This is your capacitor over here. Why? Because over here air जो है, यहाँ पे एयर है, एमीटर और कलेक्टर और एमीटर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है. देयर इज नो कनेक्शन ओवर हियर. सो एमीटर और कलेक्टर के बीच में योर एयर इज एक्टिंग एज योर डाइइलेक्ट्रिक एंड योर if we know the transistor function, your majority carriers P यहाँ पे you have more doping. Emitter is highly doped. तो यहाँ पे आपके पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू योर कलेक्टर. सो दिस विल बी मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू दिस. तो यू विल हैव वन मोर कैपेसिटर ओवर हियर which is called as your capacitor CCE between collector and emitter. Air is acting as your dielectric medium. Emitter is highly doped as compared to your collector. इसलिए वहां पे more positive charges होंगे. So this has more charges, therefore इसको positive बोल रहे हैं, और इधर negative है as compared to your emitter. Therefore there is a stray capacitances developed over here. Or since that is also between between the junction, it is also called as junction capacitors. So you have three junction capacitors. You have three junction capacitors. Which are those three? First is capacitor between base and emitter. Second is capacitor between base and collector. Third one is capacitor between collector and emitter. So you have three junction capacitors in the transistor which are present, but हम उसको देख नहीं पाते हैं. Clear with this thing? First point is clear. How many junction capacitors are there for your transistor? Yes, ma'am. Ma'am. Yeah. Now come to your FET. FET में भी same रहेगा. Instead of base emitter, we will call that capacitor as CGS, capacitor between gate and source. You will call this capacitor as CGD, capacitor between gate and drain, and this capacitor as DS, capacitor between drain and source. This is
for your FET. तो वहां पे भी 3 जंक्शन कैपेसिटर्स है between gate and source, between gate and drain, and between drain and source. Okay, so you have 3 junction capacitors in both your BJT and FET. Now we come to your second point, how they react to these capacitors react. So my second point is effect of these capacitors. Now I will ask you a very, very simple question. We all know that reactance of capacitor is equal to 1 by omega C. We know this, where omega is nothing but 2 pi F. That means reactance of capacitor depends upon 2 factors. Your first factor is it depends on your frequency, omega hai, therefore it depends on your frequency, and it depends on the capacitor also. So it depends on 2 factors, capacitor and frequency. ये हमें पता है reactance of capacitor. Now suppose I am taking frequency constant. मैंने frequency constant रखा है 150 Hertz. Frequency is constant 150 Hertz, and I am changing the value of capacitor. C की value at 1, suppose I am taking one capacitor as 20 microfarads, and another capacitor I am taking as 20 picofarads. 2 capacitors, 20 micro and 20 pico. Frequency I have kept it as constant 150 Hertz. किसका reactance ज़्यादा होगा? Which capacitor will give you more reactance? मुझे XC का बताओ. What will be your reactance of XC? Value नहीं चाहिए मुझे, generalize बताओ कि frequency मेरी constant है, तो frequency का effect नहीं होगा because frequency is constant for both. Which will cause the effect now? Tell me which Pico will be higher. Pico will have lower the capacitance value, higher is the reactance. So यहाँ का XC will be lesser and this XC will be more. Everyone agrees? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्यों? Because my frequency is a constant. My frequency is a constant. I am not changing my frequency. Okay. Up, XC is less. XC is less. Reactance offered is low. That means capacitor is acting as short circuit. हमको पता है reactance low यानी short होता है. Reactance high माने capacitor is open circuit. ठीक है? यानी it will not allow your signal to pass. ये भी हमको पता है. अब आ जाओ आपके नॉर्मल लो, अब आपके सर्किट में सर्किट के कैपेसिटर्स पे आओ. यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. नाउ कम टू योर सर्किट. इन योर प्रीवियस लेक्चर यू नो दैट फॉर योर लो फ्रीक्वेंसी CC1, CC2 एंड CE और CS, ठीक है, FET है तो CS. These are having your effect. These are having your effect. ये जो capacitors है, आपने numericals भी solve किया है. You have seen that the range of these capacitors is in micro, right? The range of these capacitors are in micro, but your stray capacitance जो आएंगे, your stray capacitances, that means your CBE, your CCE and your CBC, or you can say CGS, CDS and CGD. इन कैपेसिटर्स का रेंज हमेशा आपका पीको में होता है. ये कैपेसिटर्स का रेंज आपका पीको में है.
because they are very, very small. They have a very, very small value. तो इसका रेंज आपका picofarads में होता है. तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, when I have low frequency, last time you have done your low frequency. When I have low frequency, at that same time, जब आपको लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मिल गई है आपको, इन दोनों रेंज में से ये जो आपके एक्सटर्नल कैपेसिटर्स हैं, and these are your stray capacitances or junction capacitances, इन दोनों में से कौन सा शॉर्ट सर्किट होगा? पहले कौन सा शॉर्ट सर्किट होगा जब लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई है? मैम पहले वाला एक्सटर्नल. वेरी गुड. एक्सटर्नल आपके शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे और उस टाइम पे ये जो आपके स्ट्रे कैपेसिटेंसेस है, योर स्ट्रे कैपेसिटेंसेस विल रिमेन ओपन सर्किट. Stray capacitances will remain open circuit. तो ये हमको पता चल गया कि ये हमारे ओपन सर्किट रहेंगे. तो यानी लो फ्रीक्वेंसी पे हमको इनका इफेक्ट नहीं दिखेगा. लो फ्रीक्वेंसी पे हमको इनका इफेक्ट नहीं दिखेगा. So when we will be able to see the effect of these capacitances? When your frequency is very, very high. क्योंकि जब आपकी frequency high हो जाएगी, so your reactance of capacitor is inversely proportional to frequency and it is inversely proportional to your capacitor value. तो at low frequency तो हमको कुछ effect दिख नहीं रहा है because a capacitor की value is very, very less. तो कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा. तो हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी बहुत इंक्रीज करते जाएंगे so that we are able to reduce the reactance of this capacitor. Okay, because the value of this capacitors are so less that it does not have any effect on your circuit because they are acting as open circuit. तो कुछ इफेक्ट नहीं है. But as your frequency goes on increasing, these, because of the frequency effect, the reactance of this capacitor will decrease and they will act as short circuit. Have you understood this point? Have you understood? Ma'am, can you repeat this part again? Explain it once. See, we know, till now we have understood that at low frequency, your stray capacitances will act as open circuit, right? Why they were acting as open circuit? Because the value of these capacitors are very less. तो आपका क्या होगा है? कैपेसिटर की वैल्यू भी लेस है और फ्रीक्वेंसी भी आपकी लेस है. दोनों फैक्टर अगर आपके कम है तो रिएक्टेंस ऑफ योर कैपेसिटर विल डेफिनेटली बी हाई. अंडरस्टूड दिस पॉइंट? Yes, ma'am. की वैल्यू भी कम है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी कम है. सो रिएक्टेंस विल बी हाई. रिएक्टेंस हाई यानी वो ओपन सर्किट होगा. अब हम इस फैक्टर को तो चेंज नहीं कर सकते बिकॉज ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से जो उसकी वैल्यू है. I cannot change this. So what is happening if I'm going on increasing this frequency? बढ़ाते जा रही हूँ. So what will happen? The effect of frequency will be dominant and your reactance will start reducing. And because your reactance goes on reducing, your capacitors will become short circuit. Understood now? Is this clear now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So at very high frequency this will happen. So at very high frequency हमें क्या होगा? Which capacitors will show your effect? Now we talk about high frequency. अब हमको पता चल गया कि at high frequency which capacitors are showing the effect? The capacitors which are showing the effect are your junction capacitors.
Okay, or your parasitic capacitors or your stray capacitors. So junction capacitors are showing the effect. You have another capacitor जो मैं आपको एक circuit में बताऊंगी. Those are your wiring capacitors. This is also a type of stray capacitor. So you have two capacitors which are showing your effect at high frequency, junction capacitors and wiring capacitors. Junction में तीन है, आपको वो पता चल गया. But they will show your effect at high frequency. So low frequency में you have three capacitors, high frequency में you have two junction and wiring capacitors. Clear? Understood? अब मैं third point पे जा रही हूँ. We will go to your third point. We will draw the circuit diagram of FET amplifier and we will see the effect. Effect on FET amplifier. Same will be on your BJT. Okay, so let me draw the circuit. Sonia ma'am, Yes, ma'am. FET. Oh, sorry. I have the habit of BJT. Sorry, class. Always start with BJT. That's Yeah. One. This is your FET amplifier. So अब हम क्या देख रहे हैं? High frequency. What will happen at your high frequency? So first, let me draw your stray capacitances. हमें पता है कि stray capacitances picture में आ जाएंगे, which are present at the junction. So this is your gate, this is your drain, and this is your source. Source, drain, gate. So one capacitor is present between gate and drain. So let me draw, I am drawing with a dotted because this we cannot see. Dotted है we cannot see by our naked eyes, but they are present with GD. One is between gate and source. CGS. One is between drain and source. CDS. ये तीन कैपेसिटर्स हमको पता है. अब इसको FET को निकाल के आप BJT प्लेस कर दोगे तो सिर्फ आपको बेस, this will become base and collector, this will become base and emitter, this will become collector and emitter. Only the notation will change. Okay. So these three junction capacitors we know. अब जब आप यहाँ से सिग्नल देते हो, इनपुट दोगे,
you will give your input over here. At this point, you will give your input. Okay. So when you give your input, you connect positive of your function generator. यहाँ पे positive connect करते हो. और यहाँ पे at this point, that is your ground point, आप कनेक्ट करते हो, ये ग्राउंड करते हो जब आप इनपुट देते हो. ग्राउंड मीन्स यू आर जनरेटिंग नेगेटिव चार्जेस. यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्जेस आ गया है, ये पॉजिटिव चार्जेस है, ये नेगेटिव चार्जेस है. एयर इज एक्टिंग एज योर डाइलेक्ट्रिक मीडियम. So what is happening? There is a capacitor developed over here. Have you understood this? ये capacitor कैसे बना? Whenever you are giving input, आप यहाँ पे आप जब इनपुट देते हो फंक्शन जनरेटर से, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज देते हो, नेगेटिव आप ग्राउंड को कनेक्ट करते हो. पॉजिटिव वोल्टेज मीन्स यू आर डेवलपिंग पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव मीन्स नेगेटिव चार्जेस. बीच में आपके एयर है विच एक्ट्स एज योर डाइलेक्ट्रिक. सो अगेन ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम. दिस इज योर डाइलेक्ट्रिक मीडियम. There is a capacitor present. So over here, there is a stray capacitance present. This stray capacitance is the wiring capacitor CWI at the input side. Wiring capacitor at the input side. Similarly, आप जब output पे जाते हो, I'll rub this part because I need a little space. When you go to the output side, this is your output. तो जब आप output side पे जाते हो, तो यहाँ पे आप CRO पे you connect. So this is positive charges, positive लेते हो, and negative आप ground पे connect करते हो. तो again these are your negative charges. Air is acting as your dielectric medium. So again there is a capacitor present over here. There is a capacitor present over here. This is your wiring capacitor at the output side. CWO, CWI. समझा wiring capacitor कैसे आया picture में? Any doubts in this wiring capacitor? Please respond. Have you understood, class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. So we know that there are 3 junction and 2 wiring capacitance, one at the input and one at the output side. Or what else do we know? That these will show your effect at very, very high frequency. अब मैं इसी circuit में simple changes कर रही हूँ. What is happening over here? Since we are talking about high frequency, ये capacitors क्या हो जाएंगे? Tell me what will happen to these capacitors. You know what will happen to your coupling and bypass Open capacitor? circuit. Open circuit. High frequency, Short circuit. Short circuit. Short circuit. Short circuit. short circuit. So these are shorted, short हो गए हैं. These are shorted, these are shorted. अब हमारा frequency response. Let me draw the frequency response, which we have drawn previously also. So this is your frequency. This is your output, or you can say your gain of the circuit. And you go on increasing the frequency. So you have seen what happens at your low frequency. ऐसे जाता है and it becomes constant. This much you have seen. Okay. Now what is happening? यहाँ से आपको जब lower cutoff हो गया, from this point onwards, I will mark this point. From this point onwards, अगर ईयरफोन आमरे ने तो चाले, आमरे तो ना. please mute yourself. So from this point onwards, अब ये इतना आपका low frequency है, आपके capacitors सब short हो गए हैं, external capacitors. So now you are going on, अभी भी increase कर रहे हो frequency, अभी भी increase किया है. But because ये आपके जो junction capacitors है, इनकी value बहुत low है, इनका effect दिखेगा नहीं. So this will remain
Still this will remain a constant. ये constant हो गया. This will remain constant. But when you're reaching at a very, very high frequency, when you're reaching at a very high frequency, what will happen to your gate and junction capacitance? ये सब stray capacitance क्या हो गए? Short हो जाएगा. तो ये यहाँ पे short हो गया. This will become short. This will become short. मैं wiring पे तो जा ही नहीं रही हूँ. This will also become short. This will also become short. So will you get the output? Just look at this. At very high frequency, we know that all your stray capacitance will become short circuit because frequency का effect आएगा, reactance offered will be very less. So there is a short circuit between these 2 points. There is a short circuit between these two. There is a short circuit between these two. There is a short circuit over here, directly ground there. There is a short circuit over here, directly ground there. So will you be able to see the output? Simple question hai. No, ma'am. Sorry? Anyone? No, ma'am. Huh? I will be. No, not. You will be able to see the output, yes or no? बस मुझे उतना No, पता. ma'am. Oh, ma'am. No, ma'am. नहीं दिखेगा. एक सिंपल लॉजिक, हम एनालिसिस पार्ट में तो बाद में जाएंगे. सिंपल लॉजिक है कि अगर आपके ये डिवाइस के सब आपस में शॉर्ट हो गए, गेट और ड्रेन आपस में शॉर्ट हो गया है, गेट और सोर्स आपस में शॉर्ट हो गया है, ड्रेन और सोर्स आपस में शॉर्ट हो गया है, तो वो डिवाइस वर्क करेगा क्या? आपका तीनों उसके टर्मिनल शॉर्ट हो गए एक दूसरे से. सो विल दैट डिवाइस वर्क? इट विल नॉट वर्क. वो नहीं वर्क करेगा तो आपको आउटपुट नहीं दिखेगा. सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, जब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी आता है, योर आउटपुट डायरेक्टली रोल्स डाउन बाय 20 dB per decade. वो सीधा रोल डाउन करता है एंड फ्रॉम दिस पॉइंट दिस इज योर हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. सो आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऐसे दिखता है कि इंक्रीज हुआ, कांस्टेंट रहा, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, बट एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ योर स्ट्रे कैपेसिटेंसेस वापस आपका आउटपुट decrease हो गया. So this is your frequency response of BJT, or you can call it as FET. दोनों का same है, FET amplifier. Have you understood the frequency response? How your frequency response looked like? Clear? Please reply. Is this part clear? Ma'am. Yes, ma'am. अब what we will do? We will divide your frequency response. अब frequency response आपके 3 parts में होते हैं. So let me again draw the frequency response and tell you which are your 3 parts of your frequency response. So this is frequency. This I'm taking gain in dB, and I'm drawing your frequency response. It increases, becomes constant, and then it decreases. Okay, so this is your frequency response. You will break your frequency response into 3 parts. First part is over here till here, then the second over here. So you can see you have 3 regions. This is your low frequency region, low frequency region. From here till here is your mid frequency. Mid frequency का मतलब neither your external capacitors nor your stray capacitances are having any effect. आपके stray capacitances open circuit है यहाँ पे. I will write it with a different ink. What do you mean by mid frequency? Your external, that is CC1, CC2, and CS or CE are open circuit. These are open circuit. These 3 are open circuit, and stray capacitors. Your stray capacitors are short circuit in this region.
ओके सो कोई भी कैपेसिटर्स का इस रीजन में इफेक्ट नहीं होगा है सो दैट इज कॉल्ड एज योर मिड फ्रीक्वेंसी एंड आफ्टर योर मिड फ्रीक्वेंसी is your high frequency. From here starts your high frequency. Okay. So now I have a question for you. अगर मुझे डिजाइन करना है मेरा एम्पलीफायर, I have to design my amplifier. So in which frequency I should make it work? मिड फ्रीक्वेंसी. मिड फ्रीक्वेंसी. वेरी गुड. क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा आउटपुट अनस्टेबल हो. आज मुझे गेन मिल रहा है 20, कल मुझे 30 मिलेगा. फ्रीक्वेंसी चेंज कर दूंगी तो फिर मुझे कम कर दूंगी फ्रीक्वेंसी तो गेन मेरा और डिक्रीज हो जाएगा. सो यू डोंट वांट इट. सो यू विल वर्क इन द मिड फ्रीक्वेंसी रेंज. So what is your frequency response? As I told you in your previous also, frequency response is nothing but the range of frequency in which the gain remains constant. The gain remains constant. तो वो आपकी मिड फ्रीक्वेंसी है. ठीक है. तो अब मुझे वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है जिसमें वो कांस्टेंट रहता है. सो आई एम रीडोइंग योर रिस्पॉन्स अगेन. तो मुझे वो जो रेंज जो होती है उसको हम कब बुलाते हैं? वी कॉल इट एज बैंडविड्थ. यू कॉल दैट एज योर बैंडविड्थ. सो AV in dB. ओके. अब हम बताएंगे व्हाट इज, वी विल सी व्हाट इज बैंडविड्थ. अब अगर आपको याद है लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में मैंने आपको बताया था कि दिस गेन इज द मैक्सिमम गेन, AV मैक्स. बट यू कम डाउन 3 dB डाउन आके आप उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो यहां से मैं लूंगी 3 dB डाउन. लीनियर स्केल में बताया था मैंने उसको डिवाइडेड बाय √2. तो ये आप क्या हो जाएगा? एक गेन. दिस विल बी वन ऑफ योर गेन. ये है AV मिड. This graph, this was called as your low frequency. Similarly, it is cutting at the higher end, so this is called as your high frequency, FH. This is called as your high frequency. And constant, ये हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक आपका मिड फ्रीक्वेंसी. जब आपको लोअर कट ऑफ मिल गई और हायर कट ऑफ हो गई तो ये बीच का जो रेंज है, दिस मिडिल रेंज इज नथिंग बट योर मिड फ्रीक्वेंसी. So what will be your mid frequency? That will be nothing but how will I find out? ये अगर FH है और ये FL है तो how will I find out this range? It is nothing but FH minus FL. And this is called as your bandwidth. So bandwidth is FH minus FL. तो जब भी आपको bandwidth बोलेंगे, you have to find out the higher cutoff frequency and you have to find out the lower cutoff frequency और फिर आप उसको minus करके bandwidth find out करोगे. Clear? Understood till here? Any doubts till here? Yes, ma'am, clear. No doubts till here? Very good. So we'll take a 5 minutes gap from here. After 5 minutes, we will proceed with what is Miller capacitor and Miller effect. So take a gap of 5 minutes. Recording stopped.
Are you all back? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yeah. Yes, Anvita ma'am. ma'am, should we start? Yes, ma'am. Ma'am, 1 minute. Yes, Deepak. Deepak has some doubt. Yes, Deepak. मैम आपने वो कैपेसिटर का वो डायग्राम मतलब पीटी का बनाया ना, मतलब एफईटी का पूरा जो डायोड के ऊपर आपने ऐसा कैपेसिटर होता है ऐसा बताया ना, मतलब फिर वो डायग्राम दिखाओ ना वो। 1 minute. One minute. ये वाला ना? ये नीचे का This you are asking ना? This one. This one you are asking? वो नीचे बनाया ना आपने। Ma'am, CBE and CBC. अच्छा हाँ, क्या डाउट है? मैम उसमें हाई फ्रीक्वेंसी पे वो शॉर्ट हो जाता है ना, मतलब वो बेसिकली डायोड के पैरेलल में है ना कैपेसिटर। डायोड के पैरेलल नहीं है, डायोड आपका एक स्टे कैपेसिटेंस जैसे एक्ट करता है। तो जहां जहां आपका डायोड है, अपने को ये पता है ना कि ये पीएन है, ये पीएन है, ये एन टाइप मटेरियल, ये पी टाइप मटेरियल। तो ये अगर पीएन है तो यहाँ पे यानी एक डायोड है, कलेक्टर और बेस के बीच में आपका एक डायोड है इनडायरेक्टली। तो अगर डायोड है तो एक कैपेसिटर भी है, पैरेलल में नहीं है आपके वो। दीपक, जैसे हम बताते हैं रिप्रेजेंटेशन में, when the diode is in forward bias, that time we are replacing that diode with the voltage source 0.7 का जो रिप्रेजेंटेशन है, वैसे ही ये हाई फ्रीक्वेंसी में उसका रिप्रेजेंटेशन दिखाई, एक्ट एज अ कैपेसिटर। ओके मैम। यानी इनडायरेक्टली अगर जहां जहां आपका ऐसे अगर डायोड जहां जहां आपका होगा वहां वहां आपका एक स्ट्रे कैपेसिटेंस होगा, पैरेलल में नहीं है वो। डायोड इज नथिंग बट अ स्ट्रे कैपेसिटेंस, तो यहाँ एक स्ट्रे कैपेसिटेंस है। ओके मैम। और वायरिंग मतलब हर जगह पे, मतलब एक जहां वायर होगी, कोई भी सर्किट लो तुम, ये एम्पलीफायर नहीं, आपने अगर रेक्टिफायर सर्किट भी लिया, ये सपोज आपका रेक्टिफायर सर्किट है, आपने लिया इसको, ठीक है, तो यहाँ पे आपने इनपुट दिया, यहाँ पे आपने इनपुट दिया है, यहाँ से आप आउटपुट लोगे, तो यहाँ पे आपका एक वायरिंग कैपेसिटर आ जाएगा, स्ट्रे कैपेसिटेंस। ठीक है, समझा। मैम आई हैव वन क्वेश्चन। या मानसी? डाउट था हाँ? मैम, आपने बोला कि हाई फ्रीक्वेंसी पे स्ट्रे कैपेसिटर्स और जो एक्सटर्नल कैपेसिटर्स है दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, तो हाँ। वो मिड फ्रीक्वेंसी का नहीं समझा, वो क्यों स्ट्रे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट है? आ जाओ वापस यहाँ पे, ये इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर्स पे। 1 मिनट। देखो, अपना जो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, राइट? It is also inversely proportional to the value of your capacitor. दोनों पे वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है? अब क्या होता है, जो आपके एक्सटर्नल कैपेसिटर्स, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया था कि एक्सटर्नल कैपेसिटर्स की वैल्यू आपकी हाई है एज कंपेयर टू स्ट्रे कैपेसिटर्स। ये स्ट्रे कैपेसिटर्स है, ये एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल की वैल्यू आपकी हाई है। ओके, तो इसकी अगर आपकी वैल्यू हाई है तो व्हाट विल हैपन टू द रिएक्टेंस ऑफ दिस कैपेसिटर? कम हो जाएगा, रिएक्टेंस उसका कम होएगा, ठीक है? अब आप ये लो फ्रीक्वेंसी में आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है? इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो व्हाट विल हैपन टू दिस रिएक्टेंस? What will happen to this reactance? ये भी लो होगा, तो यहाँ पे क्या होगा है, आपका कैपेसिटर की वैल्यू हाई है,
बट आपकी क्या बोलते फ्रीक्वेंसी भी हाई है, लो फ्रीक्वेंसी में, लो के हिसाब से फ्रीक्वेंसी हाई है, तो आपका रिएक्टेंस आपका कम हो रहा है। रिएक्टेंस कम हो गया यानी कैपेसिटर्स आपके शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? हाँ, यस मैम। हाँ, अब वापस आओ स्ट्रे कैपेसिटर। अभी यही चीज मैं वापस आपको स्ट्रे के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब क्या हो गया है, स्ट्रे कैपेसिटेंस जो है इनकी वैल्यू बहुत कम है, बहुत कम है उनकी वैल्यू। इट इज वेरी वेरी लेस। तो जब उसकी वैल्यू इज वेरी वेरी लेस, तो रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय देम विल बी वेरी वेरी हाई। ठीक है? तो जब इसका जो ये लो फ्रीक्वेंसी है ना, इसकी जो लो फ्रीक्वेंसी है, तब ये कैपेसिटर क्या होगा, ये अगर ये जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि लो फ्रीक्वेंसी, सपोज मैं 150 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ले रही हूँ, ठीक है, आपकी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आई है 150 हर्ट्ज, सपोज आई एम टेकिंग दैट फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी पे आपके स्ट्रे कैपेसिटर की वैल्यू 20 पिको है और आपके एक्सटर्नल कैपेसिटर की वैल्यू 20 माइक्रो है। तो एक्सटर्नल वाला तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बट इसकी वैल्यू इतनी कम है और इसके हिसाब और इसकी एट दैट सेम पॉइंट इसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई के हिसाब से ये फ्रीक्वेंसी भी कम है, तो ये ओपन सर्किट जैसा एक्ट करेगा। उस फ्रीक्वेंसी के लिए ये ओपन सर्किट जैसा एक्ट करेगा। तो जब मिड फ्रीक्वेंसी आएगा, जब मिड फ्रीक्वेंसी है, तो क्योंकि हमारे स्ट्रे कैपेसिटर्स अगर आप देखोगे, स्ट्रे कैपेसिटर्स आपके पैरेलल में, किधर, 1 मिनट, लेट द सर्किट कम। हाँ, ये जो स्ट्रे कैपेसिटर्स है ये आपके पैरेलल में है, इधर ये है आपके स्ट्रे कैपेसिटर। तो ये तो ओपन ही चाहिए ना, आपको सर्किट ऐसा दिखना चाहिए। जब आप देख रहे हो अपना सर्किट, तो इट शुड बी लाइक दिस। ये स्ट्रे कैपेसिटर्स तो आपके ओपन ही रहना चाहिए। ये अगर आपका शॉर्ट हो गया तो आपका वर्क ही नहीं करेगा। तो ये हमारा ओपन होना चाहिए। तो मिड फ्रीक्वेंसी में ये ओपन है, तो मिड फ्रीक्वेंसी में वो ओपन रहता है, तो उसका कुछ इफेक्ट ही नहीं है, वो कैपेसिटर का कुछ भी इफेक्ट नहीं है मिड फ्रीक्वेंसी में, बिकॉज इट इज ओपन। हाँ मैम, मिड फ्रीक्वेंसी में स्ट्रे कैपेसिटर ओपन सर्किट होता है। यस, और एक्सटर्नल कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होता है। ओके मैम, गॉट इट। समझा? अब जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अभी क्या हो गया, मिड तक तो ये शॉर्ट हो ही चुके हैं ना, तो ये तो आपके शॉर्ट ही है, CC1 CC2 ये आपके शॉर्ट ही रहने वाले हैं। लेकिन जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अब क्या होगा, स्ट्रे कैपेसिटर्स भी शॉर्ट हो जाएंगे और इससे आपका गेन रिड्यूस हो जाएगा। समझा अभी? यस मैम। मैम, और बोलो। हम लोग वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वायर से मतलब नहीं एक मिनट, कर ही नहीं सकते। एक मिनट दीपक, मैं नीचे डायग्राम देख रही हूँ। आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक ओवर हियर और इसलिए वो कंफ्यूजन हुआ है। 1 मिनट, आई मेड अ मिस्टेक। लेट मी चेंज इट, दिस पॉइंट उल्टा लिखा था मैंने। 1 मिनट। These capacitors and your stray capacitors. These capacitors are short circuit and this capacitor is open circuit. मैंने उल्टा लिख दिया था। हाँ बोलो। मैम, तो हम लोग वायर से भेज ही नहीं सकते वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वो नहीं, शॉर्ट ही हो जाएगा ना। इसलिए तो मैंने बोला Recording in progress. जैसे ही आपको वेरी हाई फ्रीक्वेंसी मिलेगा, देयर इज एन इमीडिएट गोल डाउन बाय 20 dB पर डिकेड। वो स्लोली नहीं जाएगा, इमीडिएट गोल डाउन है। क्योंकि जैसे ही आपके हाई फ्रीक्वेंसी आएगा, आपका वायरिंग कैपेसिटर्स आ जाएगा, आपके जंक्शन शॉर्ट हो जाएंगे, तो इमीडिएट गोल डाउन है आपका। ओके मिस, समझा। ठीक है। Now let's go to your Miller effect and Miller capacitance. So for this, I will redraw your circuit of FET amplifier.
अब मैं सर्किट में आपके बना रही हूँ कपलिंग बिकॉज वो सर्किट है, बट आपको मालूम है कपलिंग और बाईपास कैपेसिटर्स आपके शॉर्ट हो जाते हैं एट दिस फ्रीक्वेंसी, बट सर्किट में तो आपके रहेंगे, उसका इफेक्ट जब आप देखोगे तो वो शॉर्ट होगा। ठीक है, सर्किट आपका ऐसे है। अब आपको क्या पता है, वायरिंग कैपेसिटर्स आर ओवर हियर, हाई फ्रीक्वेंसी पे ये स्ट्रेट कैपेसिटेंस है इसलिए डॉट से बनाया है। अनदर वायरिंग कैपेसिटर इज ओवर हियर, CWI, CWO, junction capacitor CGD, CGS, ठीक है, ये आपका सर्किट। अब इस सर्किट में इफ यू सी इन दिस सर्किट, इफ यू सी अ पॉइंट, this is your input of your FET amplifier and here is the output of your FET amplifier. Okay, so there is a capacitor at very high frequency, there is a capacitor CGD which is connected between input and output. So अगर मैं उतना ही पार्ट लेती हूँ, I am taking, now I am just taking your amplifier, ये FET एम्पलीफायर है मेरा ब्लैक बॉक्स, इसका गेन वोल्टेज गेन AB है, यहाँ पे मेरे इनपुट है, यहाँ पे मेरा आउटपुट है, और एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एक कैपेसिटर है कनेक्टेड ओवर हियर बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, इस कैपेसिटर को CGD बोला आपने। ओके, ये आपका दिख रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग, आपने कंट्रोल्स पढ़ा है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन लूप और क्लोज लूप। क्लोज लूप। क्लोज लूप, वेरी गुड। तो क्या होगा है यहाँ पे क्लोज लूप, यानी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, देयर इज अ फीडबैक फ्रॉम योर आउटपुट व्हिच इज कमिंग टू योर इनपुट। सो इस कैपेसिटर का, ये जो कैपेसिटर है CGD, इसका इफेक्ट, इट्स इफेक्ट विल बी ऑन बोथ, इट विल शो इट्स इफेक्ट at input and output. So you have to study that effect कि input पे इसका effect क्या होगा है और output पे इसका effect क्या होगा। That effect at the input and output is known as your Miller effect. So what is your Miller effect? That whenever there is a capacitor, अब ये CGD के बदले आपका C भी हो सकता है, अगर ये BJT लेंगे तो CBC होगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करेंगे, उसको एक फीडबैक कैपेसिटर करके बोल देंगे, फिर कोई भी फीडबैक कैपेसिटर होने दो, राइट। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल कॉल दैट एज योर फीडबैक कैपेसिटर। So let me call this as my feedback capacitor CF. So what is your Miller effect? If there is a capacitor connected between input and output, its effect will be seen on both input side and output side. That effect is nothing but your Miller effect. So you have to see that effect. कि क्या है Miller effect? तो अब दोनों तरफ होगा, इनपुट साइड इफेक्ट होगा, आउटपुट साइड इफेक्ट होगा। सो वी विल सी व्हाट इज मिलर इफेक्ट। सो लेट अस सी मिलर इफेक्ट एट इनपुट।
तो मुझे मिलर इफेक्ट एट इनपुट देखना है तो आई विल रीड्रॉ दिस सर्किट, आई विल रीड्रॉ, पूरा सर्किट नहीं ड्रॉ करूंगी, अब मैं सिर्फ एम्पलीफायर पे इफेक्ट देखना है। ये एम्पलीफायर कोई भी एम्पलीफायर हो सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि इट इज बीजेटी एफईटी। आप लोग को जैसे मैंने बताया आगे जाके आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ोगे तो वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी हो सकता है। कभी भी अगर एक फीडबैक कैपेसिटर कनेक्टेड है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट तो उसका इफेक्ट आपको दिखेगा, बट हमारे केस में ये हमको हाई फ्रीक्वेंसी पे दिख रहा है। This is your feedback capacitor. So we will do the derivation of Miller effect at input. So let us start and let us see what is the effect at the input side. So मैं अब करूँगी, I will mark your current over here. You have a current over here, input current. This is your feedback current, IF, and this is the current of the amplifier. So I1, I can say. Or we will change the notation. Let this be I1 and let this be II. Input current to your amplifier. Okay? Apply KCL at node A. We will apply KCL at node A. See the derivation of effect of Miller at your input side. Output side will be your self-study. Same process रहेगा, output side के लिए आपको self-study है. So I'm just telling you about your input side. So apply KCL at node A. Tell me what will be your KCL at node A. Tell me the equation. Please tell me the equation, any one of you. KCL. I1 minus II I1 minus II plus IF plus I equal to IF. is equal to 0. 0. Right? तो इससे अपने को क्या मिल जाएगा? I1 or I can say II is equal to I1 plus IF. Right? I get this equation. Let this be my equation 1. अब इसमें I1 आपका you have to find out I1, you have to find out II and you have to find out IF in terms of the resistance. So II क्या होगा आपका? Voltage VI upon the input resistance of your amplifier. यहाँ पे input resistance of amplifier is equal to, this will be V1 upon, what will be this? We will keep that as VI only. We will keep this as I1 and ये IF क्या होगा आपका? VO minus VI upon reactance of this capacitor. Current कितना flow होगा? VO minus VI upon reactance of this capacitor. So VO minus VI upon reactance of this capacitor. XCF. Okay. Your value. Now this value of your. Sorry ma'am, can you repeat the last part? I had a poor connection. Sorry? Can you repeat the last part? The fractional part, I had a poor connection, so I got disconnected. Okay. Till your equation 1, it is okay? Yes ma'am, it's clear. So II की value आपकी क्या है? VI upon RI.
is equal to what is the value of I1? I1 हम ऐसे ही रख रहे हैं, plus what is the value of this IF? IF will be the voltage at this point. You are able to see this voltage minus the voltage over here, which is VI, divided by the reactance of the capacitor. So it is VO minus VI upon XC. VO minus VI upon XC. I1 अब आ जाओ. I1 आपका क्या होगा? I1 is the current over here. So voltage is VI. VI upon the total input impedance of your circuit. ये सिर्फ एम्पलीफायर का, ये RI is the input impedance of amplifier. एम्पलीफायर यानी ये आपके सिर्फ BJT का इनपुट इम्पीडेंस है, सिर्फ FET का इनपुट इम्पीडेंस है, बट ये ZI इनपुट इम्पीडेंस आपके पूरे सर्किट का है. So there is a difference between the two. So I am rewriting with that. So I will get VI upon RI is equal to VI upon ZI plus, if I take VI common, it will be VO upon VI minus 1 upon XC. Okay, I will get this equation. अब इसमें से VI, this is suppose your equation 2. अब इसमें से Ma'am, yes. ma'am, how I1 is equal to VI upon ZI? I didn't understand that. 1 minute, come to your circuit. I1 ये है, 1 minute. This is your I1. Voltage is, current will be equal to voltage upon resistance, right? कौन सा करंट है? I1 करंट है. वोल्टेज कौन सा जा रहा है इसमें? VI. So this is VI. बट रेजिस्टेंस जो है ये आपके पूरे सर्किट का जो भी इनपुट इम्पीडेंस होगा, आप जब यहाँ से देखोगे, वट एवर विल बी द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट, यहाँ पे इज द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ योर एम्पलीफायर. इस पॉइंट के बाद इनपुट इम्पीडेंस चेंज होगा बिकॉज कैपेसिटर कनेक्टेड है, एम्पलीफायर के आपके सर्किट कनेक्टेड है. अभी मैं आपको सर्किट, 1 मिनट, ऊपर का सर्किट दिखा, 1 मिनट, 1 minute, let me do this. Okay, suppose this is your amplifier, this is your FET. ये जो FET है, this is your amplifier. तो इस पॉइंट से आप देखोगी तो इम्पीडेंस अलग होगा FET का. But if you see from this point, your impedance will be different because it will consider your RS, R1, R2, everything, right? Are you able to understand, Nancy? अगर यहाँ से देखोगी तो आपका RS का इफेक्ट आएगा, R1 का इफेक्ट आएगा, R2 का इफेक्ट आएगा, तो इम्पीडेंस अलग होगा. और वही चीज आप अगर यहाँ से देखोगे, सिर्फ ये पॉइंट से इधर देखोगी, तो इनपुट इम्पीडेंस आपका अलग हो जाएगा. So the same point we are doing over here. यहाँ पे मैं, if I'm seeing from this point, there is a difference in the input impedance. If I see from this point, there is a difference in the input impedance. So उसको मैंने notation दिया है. ZI को मैंने पूरे circuit का input impedance बोला है. RI को सिर्फ आपके amplifier का input impedance बोला है. Understood now? Yes, ma'am. Now come to this equation 2. अब क्या होगा? VI will get cancelled. So we will cancel your VI. Second thing, we know that gain of your amplifier is equal to VO by VI. ये आपको पता है. Gain is given as VO by VI. तो वो भी हम substitute करेंगे. So my equation 2 will become, equation 2 is 1 by RI, because I'm cancelling your VI, which is common throughout, is equal to 1 by ZI plus, it is AV, VO by VI is AV,
AV minus 1 upon XC. Okay? अब इस इक्वेशन में let this be equation 3. Now in this equation, we will substitute the value of XC. XC is equal to 1 by 2 pi FC. Omega C, omega is 2 pi F into C. अब यहाँ पे जो मैंने XC लिखा है, I will change that to F because we have given the notation of feedback capacitor as F. So this is F. Similarly, over here, we will change the notation to XF. So over here, the capacitor will be CF. तो आपको ये मिल गया 1 by 2 pi F into CF, reactance of your capacitor. Put that in your above equation, और मैं सिर्फ इतने पार्ट को ही ले रही हूँ. So I have AV minus 1 upon XF is equal to AV minus upon 1 by 2 pi FCF. So this will be nothing but 2 pi FCF into AV minus 1. तो अगर इस इक्वेशन को देखोगे, what you are getting is 2 pi F, you are getting 2 pi F CF AV minus 1. So this is nothing but, again, this is a reactance of your capacitor. This is nothing but 1 by X. This is 1 by X. Reactance of capacitor here. This is 1 by X. We call this as MI. Miller effect at the input side. Reactance of capacitor at the input side. So M is for your Miller. So XMI की value क्या होगी? XMI is nothing but it is 1 by 2 pi F CF into AV minus 1. Okay, but we all know that reactance of capacitor is given as minus, because it is a lagging, it is always given as minus X. ये हमेशा minus X होता है. So changing this to reactance, it will be XMI is equal to 1 by 2 pi F CF into 1 minus AV. I will change this into 1 minus AV because it is always minus. It is always minus. ठीक है, तो that means indirectly, अभी इसको compare करो, reactance of any capacitor is given as 1 by omega C. तो omega is nothing but 2 pi F and C is nothing but CF into 1 minus AV. So the new capacitor value, so the new capacitor value becomes is CF into 1 minus AV. So आपका this capacitor is known as your Miller capacitance at the input side and it is given as CF into 1 minus AV. CF आपका कोई भी feedback capacitor हो सकता है. So this is very, very important. This is very, very important. यहाँ तक समझा? If you have doubts, you can ask me. इधर हम लोग ने फीडबैक कैपेसिटर एक्सटर्नल लगा है. फीडबैक कैपेसिटर एक्सटर्नल नहीं है बेटा, वो इंटरनल है एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी.
मैम अगर वो इंटरनली है तो वो ट्रांजिस्टर कंप्लीट ही हो नहीं, पूरा हो गई नहीं है। मतलब हम लोग ने ऊपर फिर एवी मतलब वो पूरा जो एम्पलीफायर का ब्लॉक और ऊपर फीडबैक कैपेसिटर लगाया ना, लेकिन एक कैपेसिटर एक मिनट सर्किट पे जाने दो। ये वाला, हाँ बोलो। मैम इधर मतलब जो हम लोग ने एवी का मतलब पूरा एम्पलीफायर का बॉक्स दिखा है, अगर वो ट्रांजिस्टर का मतलब पार्टी है ना कैपेसिटर, मतलब वो डायोड ही एज अ कैपेसिटर ऐड करते हैं, तो वो मतलब एम्पलीफायर कंप्लीट कहाँ हो गया वो? फिर हम लोग से मतलब फीडबैक कैसे बना दिया? नहीं समझा। समझा मुझे। ये देखो, अभी वापस तुम अपने मेन सर्किट पे जाओ। फीडबैक कैसे बना दिया बेटा? जब तुम हाई फ्रीक्वेंसी पे देखोगे तो हाई है CGD, इसका इफेक्ट आएगा। हाँ ठीक है, तो ये कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है आपके सर्किट को? इनपुट और आउटपुट के बीच में कनेक्टेड है। हाँ ठीक है, तो इस कैपेसिटर को मैंने CF बोल दिया क्योंकि ये इनपुट और आउटपुट के बीच में है, तो ये फीडबैक कैपेसिटर है, तो ये CF है। तो उसका इफेक्ट आएगा ना, इनपुट साइड पे भी कुछ इफेक्ट देगा, वो आउटपुट साइड पे भी देगा जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी आपकी। यस मैम। तो वो क्या इफेक्ट देगा? तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा ना कि वो क्या इफेक्ट देगा है जब मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है और ये कैपेसिटर पिक्चर में आ रहा है। मैंने अभी तुमको नॉर्मल वे में तो बोल दिया कि वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बट वो हाई फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी जिसमें वो शॉर्ट होगा? मैंने अभी बोला है कि चलो मैं बोलती हूँ वो 200 किलोहर्ट्ज पे हो जाएगा, तो वैसा होगा क्या? वो नहीं नहीं होगा ना। वो अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि कौन सी हाई फ्रीक्वेंसी पे वो एकदम शॉर्ट सर्किट होगा। तो उसके लिए मुझे उसका अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट देखना है। तो जब उसका अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट देखना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि वो इनपुट साइड पे क्या इफेक्ट देगा है और आउटपुट साइड पे क्या इफेक्ट देगा है। समझ गए हो? तो यस उसके लिए मैम। हमको ये करना पड़ेगा। यस मैम। तो अभी आप क्या बोल रहे हो कि एम्पलीफायर कैसे आया? अब आपका क्वेश्चन समझाओ मुझे। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ट्रांजिस्टर का पार्ट ही है ना, मतलब जो मतलब जो तीनों कैपेसिटर बने वो मतलब ट्रांजिस्टर ही है ना बेसिकली। वो तो ट्रांजिस्टर में अभी मैं आपको कैसे समझा, जैसे आप अगर ट्रांजिस्टर देखते हो तो आपको क्या दिखता है? सिर्फ बेस, कलेक्टर, एमीटर, 3 जंक्शंस दिखते हैं। ठीक, हाँ आपको ये कैपेसिटर्स नहीं दिखते हैं। लेकिन हाँ जब आप उसका फैब्रिकेशन देखोगे तो उस फैब्रिकेशन से पता चलता है कि ये कैपेसिटर्स हैं। ये कैपेसिटर्स ऑलरेडी है, ये फैब्रिकेशन की वजह से है। इतना हमने कनेक्ट किया है ना कुछ किया है, बट ये फैब्रिकेशन की वजह से ये कैपेसिटर्स है। तो अगर कैपेसिटर्स है तो उसका इफेक्ट भी होगा, बट नॉर्मल रेंज में उसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा। नॉर्मल उसमें उसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब आप उसका फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़ाओगे तब ये इंटरनल कैपेसिटर्स का इफेक्ट होगा, तब तक नहीं होगा। अभी मैं सिंपल तुमको बोलती हूँ कि कोई क्या बोलते, तुम डॉक्टर तुमको डोज देता है, जब तुम बीमार होते हो तो डॉक्टर बोलता है 3 बार ये दवाई लो, 2 बार ये दवाई लो, एंटीबायोटिक्स लो। ठीक है, बट तुम वही दवाई को तुम अगर एक ही टाइम लोगे, दिन में डॉक्टर ने बोला है 3 टाइम लो, एक ही टाइम लोगे तो उसका इफेक्ट दिखेगा क्या आपको? नहीं बोलो दीपक, नहीं दिखेगा। नहीं नहीं दिखेगा क्योंकि उसका इफेक्ट ही नहीं होगा है आपकी बॉडी में। तो सेम चीज है, जब ये कैपेसिटर्स अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो इनका कुछ भी इफेक्ट नहीं है जब तक तुम लो फ्रीक्वेंसी पे वर्क करोगे। यानी इनफैक्ट जब तक तुम मिड फ्रीक्वेंसी पे वर्क करोगे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर तुमने मिड फ्रीक्वेंसी के ऊपर इनको वर्क करवाया अपने एम्पलीफायर को तो ये कैपेसिटर एक्टिवेट हो जाएंगे और इसका इफेक्ट तुमको दिखना शुरू हो जाएगा। ओके मैम। तो जैसे तुमने 3 टाइम दवाई ले ली तो तुम्हारे बॉडी इफेक्ट करना शुरू कर देता है ना दवाई के लिए, वैसे ये हो जाएगा। तो आपको मिड फ्रीक्वेंसी तक कुछ भी नहीं होने वाला है। ओके मिस।
समझा अभी? हाँ तो अब उसका इफेक्ट क्या है वो हम देख रहे हैं। तो हम इनपुट साइड पे हमने क्या देखा उसका इफेक्ट, कि ये कैपेसिटर जो CF था, this capacitor which was CF, that has changed to CF into 1 minus AV. CF से वो 1 minus AV हो गया input side पे. So the effect at your input side is that your capacitor is changing from CF to CF into 1 minus AV. And how it will be connected to your circuit, उसके लिए हम वापस we will go to your equation 3. So this was your equation 3. ये आपका equation 3 था ये. This was your equation 3. तो I will go back to your equation 3. I will write that equation 3 आपका था 1 by Ri is equal to 1 by Zi plus AV minus 1 upon XCF. तो इस चीज को we have derived it everything, और हमको पता चला कि this is coming out to be 1 by Ri plus 1 by Zi plus 1 by XMI. ये हमने पूरा डेरिवेशन किया अलग से, और हमको पता चला कि AV minus 1 upon XCF is nothing but 1 by XMI, where M stands for your Miller effect at the input side. तो अगर ये कनेक्शन देख रहे हो, ये सॉरी दिस इज इक्वल टू, ये आप देखोगे तो आप क्या बोल सकते हो इसको देख के? टेल मी व्हाट कैन यू से, क्या होगा? Input resistance is equals to Miller effect of the input resistance and the impedance. हाँ, बट ये सीरीज कनेक्शन है कि पैरेलल है? Parallel. Parallel. That means your Miller capacitor, तो इफेक्ट क्या है? मिलर कैपेसिटर. क्या है मिलर कैपेसिटर की वैल्यू? हमने अभी फाइंड आउट किया ऊपर. मिलर कैपेसिटर इज नथिंग बट CMI, which is equal to your feedback capacitor into 1 minus AV, is connected in parallel. It is connected in parallel to the input side. ठीक है, तो यानी कैसे कनेक्टेड रहेगा? ऐसे कनेक्टेड रहेगा आपका. ये हो जाएगा आपका मिलर कैपेसिटर, और यहां पे हो जाएगा आपका इनपुट VO. ठीक है, एट द इनपुट साइड. क्लियर विद दिस मच पार्ट? मैम मुझे वो CF का पूछना था. वो जितने भी स्ट्रे कैपेसिटर्स हैं, GD, DS एंड GS, ये इनके ही कॉम्बिनेशन था ना सिर्फ? नहीं, CF is only between your input and output. ये देखो ऊपर, वापस मैं सर्किट पे जा रही हूँ, 1 मिनट. CF is only this capacitor CGD. So CF is nothing but it is CGD in your FET, or it will be CBC in your BJT. FET के लिए ये होगा और BJT के लिए ये होगा, बाकी सब अलग है. ठीक है, तो सिर्फ हमने ये कैपेसिटर का इफेक्ट देखा है, और उसका देखना हमको जरूरी क्यों था? क्योंकि वो फीडबैक जैसा एक्ट कर रहा है. तो इनपुट पे भी इफेक्ट है, आउटपुट पे भी इफेक्ट है. समझा अभी? यस मैम, गॉट इट. अब आप लोगों को मैं सेल्फ स्टडी के लिए दे रही हूँ. व्हाट आई एम गिविंग यू दिस फॉर योर सेल्फ स्टडी इज मिलर इफेक्ट एट द आउटपुट साइड. ठीक है, एट द आउटपुट साइड. तो मैं सिर्फ आपको ब्रीफ बता रही हूँ व्हाट विल हैपन. आपने जैसे अभी इनपुट साइड पे KVL लगाया, लेट दिस बी नोड B, आउटपुट साइड पे नोड B, यहाँ पे आपको KCL लगाना है. You have to apply KCL over here. ठीक है,
फिर सेम स्टेप्स फॉलो करनी है, KCL ओवर हियर, और बाकी जैसे अभी हमने स्टेप्स फॉलो किया है, गो थ्रू इट, सेम स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, एंड आई जस्ट गिव यू द आंसर, मिलर इफेक्ट एट द आउटपुट साइड. आउटपुट साइड पे उसका क्या इफेक्ट आएगा? यू विल फाइंड आउट CMO. CMO is the Miller capacitance at the output side. That will be given as CF into 1 minus 1 by AB. सिर्फ इतना चेंज आएगा, 1 minus 1 by AB. क्योंकि यहाँ पे अगर आप इक्वेशन देखोगे ना सॉल्व करते वक्त, तो ऑलमोस्ट सेम इक्वेशन आएगी. मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, जहां पे आपका VI आएगा ना, जैसे आप, एक मिनट, गोइंग बैक, यहाँ पे आपको IF का इक्वेशन क्या मिलेगा? आउटपुट साइड के लिए IF विल बी इक्वल टू VO माइनस VI अपॉन XCF. ओके, सो सिंस यू आर फाइंडिंग एट द आउटपुट साइड, आप यहाँ पे रिप्लेस करोगे इसको, इस इक्वेशन, यहाँ पे कॉमन निकालोगे VO को, so it will be 1 minus VI by VO upon XCF. तो VI by VO is 1 by AB. VI by VO is nothing but 1 by AB. सिर्फ वो चेंज होगा, बाकी ऑलमोस्ट आपका डेरिवेशन इज द सेम. ओके, सो आई एक्सपेक्ट यू टू डू दैट. अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लियर करेंगे, बट यू शुड गेट दिस as your Miller output, and again it will be connected in parallel. तो ऐसे connected रहेगा आपका CMO और ये output side, so it will be connected in parallel. So Miller effect क्या है? Miller effect is you are seeing the effect of your feedback capacitor in your amplifier circuit, and when you are seeing that effect, you are finding the Miller capacitance. Miller capacitance, मैं यहाँ पे वापस फॉर्मूला लिखूंगी. Miller capacitance CMI at the input side is given as CF into 1 minus AV. Miller capacitance at the output side is given as CF into 1 minus 1 by AB. तो कुछ भी, यानी अभी आप हमें ये समझ गया कि वो कैपेसिटर कैसे एक्ट करेगा, इनपुट साइड पे पैरेलल हो जाएगा और आउटपुट साइड पे भी पैरेलल हो जाएगा. क्लियर टिल हियर? एनी डाउट्स टिल हियर? यू वांट टू आस्क मी समथिंग? और मिलर इफेक्ट एट द आउटपुट सेम टाइप से आपको डेरिवेशन करना है, सिर्फ जैसे मैंने बताया एट KCL एट नोड B लगाओ, सेम टाइप से डेरिवेशन करना, यू विल गेट द आंसर. नथिंग न्यू इन इज देयर इन दैट. इज दिस क्लियर? टिल हियर इट इज क्लियर? Ma'am, please send us the modules now. Modules will be given to you after the chapter completion. This, what I'm teaching right now, these notes I will be sharing it. Okay? Okay, ma'am. Any other doubts? So let me start with, now we have to see the effect of, you have to find your lower cut, you have to find your higher cutoff frequency. So उसके लिए अब वापस मैं डायग्राम बना रही हूँ आपका FET का. I will just draw the equivalent today and then we will revise. Derivation, everything we will do in the next lecture. And please keep your calculators ready. We will be solving a numerical also.
Okay, this is your circuit. C, G, D. Now, when you go for the analysis, you have to follow certain steps. So I will write down the steps for your analysis. Steps for analysis. Since we are doing your high frequency, first thing is short circuit all coupling and bypass capacitors. Because we are working for high frequency. So all these will act as short circuit. So short circuit them. Second step is draw the AC equivalent. So AC equivalent, as I told you last time, जब भी आप AC equivalent बना रहे हो तो DC sources will be short circuit or will be grounded. और फिर आपका connections करना है. Then you have to analyze and find the dominant frequency. Find dominant. कौन सी होगी आपकी डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी? इसमें लोअर के लिए क्या थी? हाईएस्ट विल वाज योर डोमिनेंट. ओवर हियर डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी विल बी लोवेस्ट. लोवेस्ट हाई फ्रीक्वेंसी is the dominant one. Okay, so you have to follow these 3 steps to find your higher cutoff frequency. अब एक बेसिक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ. मैं वापस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बना रही हूँ. That is just for your understanding. I will rub this part. This is your frequency response. You know this. ठीक है, यहां तक हमने बोला था कि ये this was your low frequency till here, and from here started your high frequency. So tell me your high frequency response is equivalent to which filter? Low frequency का आपने मुझे बताया था. Low frequency is equivalent to high pass filter. So this is equivalent to which filter? Low pass filter. वेरी गुड. लो पास. क्यों? क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है, मैं इसको वापस अगर बनाऊंगी सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को, तो इस टाइप से आपका रिस्पॉन्स है. सो जो ये फ्रीक्वेंसी आपको लग रहा है कि दिस इज माय हाई फ्रीक्वेंसी, बस बट उस फिल्टर के लिए ये लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है. उस फिल्टर के लिए दिस इज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी. सो हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स is similar to your low pass filter. Opposite. It is similar to your low pass filter. और low pass filter का RC equivalent क्या है? It is your resistor in series and a capacitor in parallel. So sir, just see the difference. Low pass low frequency response से compare करो. लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में यहाँ पे रेजिस्टर के बदले कैपेसिटर था. इंटरचेंज हो गई है अभी प्लेस. सो यू हैव अ रेजिस्टर एंड अ कैपेसिटर ओवर हियर. सो अब जब भी आप पूरा इक्विवेलेंट बनाओगे तो कैपेसिटर शुड कम इन पैरेलल. अंडरस्टूड? एनी डाउट्स इन दिस पॉइंट?
Your high frequency response is equivalent to your low pass filter, and low pass filter is nothing but your R and C. Capacitor is in parallel. Have you understood this point? Yes, ma'am. Any Yes, doubts? ma'am. Any doubts? Ma'am, could you explain this high response or low pass filter means? अच्छा, हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा है आपका? इस फ्रीक्वेंसी से, फ्रॉम दिस फ्रीक्वेंसी इट इज बिकमिंग कांस्टेंट एंड देन इट इज कमिंग डाउन. ओके, सो ये सिर्फ इतना ही पार्ट देखोगे. अगर आप यू सी ओनली दिस पार्ट, सो इट इज सिमिलर टू दिस, इट इज कांस्टेंट एंड देन इट इज कमिंग डाउन. तो लो पास फिल्टर क्या होता है? वो लो फ्रीक्वेंसीज को पास करता है, हाई फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक करता है. तो सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर. बट जो इसकी लोवेस्ट, जो इधर तुमको लग रहा है ना कि ये तो मिड फ्रीक्वेंसी है, बट एक्चुअल में आपके फिल्टर के लिए इट इज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी. सो इट इज इक्विवेलेंट टू योर लो पास फिल्टर. और लो पास फिल्टर होता है रेजिस्टर और कैपेसिटर का ऐसा कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर इन पैरेलल. हाई पास फिल्टर था आपका कैपेसिटर इन सीरीज. दिस वाज योर हाई पास फिल्टर. This is high pass filter and this is, ठीक है? Yes, ma'am. Got it. हाँ. We'll just have a quick revision what we studied today. The first important thing which we studied was your stray capacitances. Stray capacitances क्या होते हैं? कितने टाइप्स के आपके स्ट्रे कैपेसिटेंस है? कैन एनीवन टेल मी व्हिच आर योर स्ट्रे कैपेसिटर्स इन योर एम्पलीफायर व्हिच यू स्टडीड टुडे? एनी वन ऑफ यू? Ma'am, 2 were on the input and output side, and the 3 were on the gates. That transistor. 3 were on the transistor side. Yes. 2 on the input and output are known as your wiring capacitance. जो ट्रांजिस्टर पे है those are known as your junction capacitors. Okay, what is the effect? Effect क्या होगा है? These stray capacitances, they are open circuit in your low frequency, they are open circuit in your mid frequency, but they are short circuit in your high frequency. Bandwidth, how will you find out the bandwidth? We studied the bandwidth also. Subtracting higher with lower. वेरी गुड. हाई माइनस लो. अभी हाई और लो फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करोगे? 3 dB नीचे जाके. हाँ, वेरी गुड. मैक्सिमम से यू विल डू 3 dB डाउन. यस खुशहाल, ऑल आंसर्स आर राइट. मैक्सिमम से 3 dB डाउन जाओगे. जहां पे आपके ग्राफ को कट होगा लोअर साइड और हायर साइड, आप फाइंड आउट करोगे. दैट विल बी योर बैंडविड्थ, FH माइनस FL. If you want to design an amplifier, आप कौन से रेंज पे वर्क करोगे? Mid frequency. Mid फ्रीक्वेंसी. that is nothing but your bandwidth. आप bandwidth पे वर्क करोगे, right? Yes. अब नेक्स्ट थिंग हमने फिर क्या स्टडी किया? मिलर इफेक्ट एंड मिलर कैपेसिटेंस. मिलर इफेक्ट क्यों नेसेसरी है स्टडी करना? व्हाट इज मिलर इफेक्ट? क्या होगा है मिलर इफेक्ट? Because stray capacitance show effect on input and output side. या फिर वहां पे एक कैपेसिटर है, जो स्ट्रे कैपेसिटेंस है उसमें एक कैपेसिटर है which is showing its effect at the input and output side both. So you have to study that effect. Okay, to study that effect it is known as your Miller effect. तो हमने क्या स्टडी किया? What effect it has at the input side? What effect it has, the capacitor at the input side? That it is parallel to input. Yes, very good. It is parallel to the input and it is given by what? क्या फॉर्मूला है उसका? CMI is equals to 2 pi f CF. No. CMI की वैल्यू. Yes, ma'am. I did study it. 1 minus AV. हाँ, CF into 1 minus AV. हाँ, what is the effect at the output side? It is parallel with the output. And what is the effect? CMO is CF into 1 minus 1 by AV.
CF into 1 minus 1 by AB. Very good. ठीक है, उसके बाद अभी हमको क्या स्टडी करना है? We have to study the analysis. हमको find out करनी है high cutoff frequency. Which one will be the dominant one? Lowest frequency. Lowest of the high will be the dominant one. Very good. और high frequency में amplifier कैसे act करेगा? Which filter? Low pass filter. Low pass filter. Very good. So with this revision, next lecture, we will do the analysis and then we will be solving one numerical and we will proceed with Recording stopped. the other things. Okay. So if you have any doubts,